Very good morning to all. Today we are going to start chapter number 7 of your textbook Moments. The name of the chapter is The Last Leaf. Right? Let us start. Sue and Jonesy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. The chapter is about two girls, Sue and Jonesy. दोनों एक फ्लैट में रहते थे, दोनों आर्टिस्ट थे, तीसरे माले पर रहते थे. Jonesy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Jonesy's condition. सब ठीक नहीं था. जोन्सी बीमार हो जाती है, निमोनिया हो जाता है उसको ठंडी के कारण. डॉक्टर आते हैं रोज लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता. One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Jonesy?" क्या कोई ऐसा है जिसके कारण जोन्सी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इतनी टेंशन में है? No. Why do you ask? The doctor said Jonesy has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to leave, medicines will not help her. Sue tried her best to make Jonesy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Jonesy did not respond. Jonesy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Jonesy's room and started painting. To take Jonesy's mind off her illness, she whistled while working. डॉक्टर कहते हैं कि जोन्सी ने जैसे मन बना लिया कि वो ठीक होने ही नहीं वाली. तो अगर वो खुद वो ठीक होना नहीं चाहती तो दवाई कुछ काम नहीं. तो स्यू ने बहुत ट्राई कि जोन्सी चीजों में इंटरेस्ट लेना सीखे, फैशन के बारे में बात करते थे, कपड़ों के बारे में. जोन्सी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही. जोन्सी अपना पेंटिंग बोर्ड जो होता है, ड्राइंग बोर्ड, वो भी रूम में लेकर जाती है जोन्सी के, जोन्सी के रूम में, और पेंटिंग करना चालू करती है ताकि उसका ध्यान उस तरफ रहे. लेकिन जोन्सी ने मन बना लिया है कि वो ठीक नहीं होने वाला. Suddenly Sue heard Jonesy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Jonesy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, 10, 9, 8, 7. She anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite the window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its. एक creeper, एक प्लांट जो दीवार से सपोर्ट से वो ऊपर की ओर चढ़ता है, as you can see in the picture also. तो एक दिन शिव ने कुछ सुना. क्या सुना? जोन्सी कुछ बोल रही थी, नंबर्स काउंट कर रही थी, 10, 9, 8, 7. जोन्सी शिव का की नजर जाती है क्रीपर, और क्रीपर के पत्ते धीरे धीरे गिर रहे. What is it? She asked. 6, whispered Jonesy. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. कुछ दिनों पहले 100 से भी ज्यादा पत्ते थे और आज थोड़े ही हैं. There are only 5. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. Autumn season में तो पत्ते गिरते ही है. The trees shed their leaves. When the last leaf falls, I will die, said Jonesy with finality. I have known this for the last 3 days. कहती है कि जब अंतिम दिन आएगा तब मैं, अंतिम पत्ता गिरेगा तब मैं मर जाऊं. Oh, that is nonsense. Nonsense. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. डॉक्टर कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओगी, तो इससे कुछ पत्ते गिरना और तुम्हारी मौत होना उसका कोई लेना देना नहीं है. Right? Jonesy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. I don't want any soup, said Jonesy. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. बस एक 4 पत्ते
एक जब अंतिम पत्ता गिरेगा मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, यानी मैं मर जाऊंगी। Sue sat on Johnson's bed, kissed her head and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear," she begged Johnson. "Promise not to look out of the window while I paint." देखो, कर्टेन मुझे खुला ही रखना है, विंडो भी, क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है, कर्टेन में बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पेंटिंग बनाना है। बाय सेलिंग दैट पेंटिंग कुछ पैसे मिलेंगे जिससे मैं तुम्हारी दवाई कुछ वगैरह कर दूंगी। तो प्लीज विंडो की ओर मत देखो, मुझे विंडो में बंद नहीं कर सकती, पर्दा प्लीज बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है। All right, said Johnsy. Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die. So let me go away peacefully, like of those poor tired leaves. देखो ठीक है, पेंटिंग पूरा करो, मुझे वो लास्ट पत्ता गिरे वो देखना है, तब मैं मर जाऊंगा। Try to sleep. I have to paint an old miner. Miner यानी the person who works in mine, diamond mine, coal mine वगैरह। तो मुझे एक माइनर पेंट करना है। I will call Berman up to be my model. एक Berman नाम का एक 60 years का एक ओल्ड बंदा उसी अपार्टमेंट में रहता है, वो खुद एक पेंटर है, आर्टिस्ट, तो वो मेरा मॉडल बनेगा, वो खड़ा रहेगा, उसको देख देख कर मैं पेंट करूंगा। Sue rushed down. Berman lived on the ground floor. He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. She poured out her worries to Berman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. Berman के पास जाती है Sue और सब बताती है कि ऐसा 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 हुआ। Is she stupid? asked Berman. How can she be so foolish? She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink, and that worries me a lot. Johnsy उसने सब खाना भी बंद कर दिया है, नहीं खा रही है, उसके कारण मुझे ज्यादा टेंशन हो रही है। I will come with you and see Johnsy, Berman said. They tiptoed into room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtain together. They went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily, and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Berman did not say a word. He went back to his room. वो ऊपर आए, लास्ट लीफ अभी बचा है, विंड बहुत ब्लो हो रही है, पत्ता गिरने ही वाला है। सब देखकर बेरमैन अपने रूम में वापस आ गया। Johnsy woke up next morning in a feeble voice. In a weak voice, she asked Sue to draw the curtain. Sue was nervous. She drew back the curtain very reluctantly. बोला जोन्सी ने तो दरवाजा तो विंडो तो खोला, मन नहीं था। Oh, she exclaimed. She looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy in spite of the storm and the fierce wind. It did not fall. Last leaf देखो ये गिरा ही नहीं, अभी भी उल्टा ये ज्यादा ग्रीन और हेल्दी लग रहा है। I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I did. विंड बहुत ब्लो हो रहा था, आज तो ये पत्ता गिरेगा। You won't die. You have to live for your friend. What would happen to me if you die? मेरा तो सोचो वो कहती है। Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. जैसा वो चिपक गया, गिर ही नहीं रहा, बार-बार वो देख रही। In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. अब पत्ता गिरा नहीं, अब Sue को थोड़ा रिग्रेट भी होता है, जोन्सी को रिग्रेट होता है। Sue को बुला के कहती है मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत ही खराब हूँ, मरने की इच्छा करना वो पाप है, अब मैं बहुत पॉजिटिव होना चाहती हूँ, मरने का आइडिया वो छोड़ देती।
Sue hugged Johnsy, then she gave her lot of hot soup and mirror. Johnsy combed her hair, smiled brightly. चमक आ गई है. In the afternoon, the doctor came. After examining this patient, he told Sue, Johnsy now has the will, यानी इच्छा है to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Behrman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. कोई मुझे जॉन्सी तो अब ठीक हो जाएगी, लेकिन बेरमैन को भी देखना है. मुझे नहीं लगता वो ठीक होने वाला है. Right? The next morning, Sue came and sat on Johnson's bed, taking Johnson's hand in hers. She said, "I have something to tell you. Mr. Behrman died of pneumonia this morning." दूसरे दिन Sue ने Johnsy का हाथ अपने हाथ में लिया, कहा, मिस्टर बेरमैन की डेथ हो चुकी है निमोनिया के कारण. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet, and he was shivering. Janitor तो caretaker थी, उसने देखा अगले दिन यानी रात को कि उसके कपड़े और शूज गीले हो गए थे, वो कांप रहा था. He had been out in that stormy night. पूरी रात वो बाहर थे, इतनी भयानक और ठंडक वाली. Then they found a ladder, और उसके बाद उन्होंने देखा कि एक ladder, एक lantern still lighted lying near his bed. उसकी बेड के बाजू में एक ladder लगा हुआ था, एक lantern, फानस जिन्हें कहिए आप. There were also some brushes and green and yellow paint on the floor near the ladder. Johnsy dear, said Sue, look out of the window. Look at that ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That is Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf. जॉन्सी को कहती है कि तुमने ये सोचा नहीं कि ये पत्ता क्यों नहीं गिरा? यही मास्टरपीस है बेरमैन का. और हर एक इंसान का बेस्ट कंट्रीब्यूशन अपनी लाइफ में वही होता है, अपना मास्टर क्रिएशन वही होता है, अपना मास्टर सक्सेस वही होता है कि जब आप आपकी सक्सेस के कारण या आपके सेक्रीफाइस के कारण, आपके कंट्रीब्यूशन के कारण किसी की और की लाइफ में ब्राइटनेस आ जाए. तो वो एक आर्टिफिशियल लीफ दैट वाज पेंटेड बाय बेरमैन सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉन्सी. ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है. अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर. जय हिंद.